sector has great hopes from the ongoing quarter. October to December is that 3-month window during which the highest property transactions get closed. Since a lot is about to happen in the final quarter of this calendar year, it is important to be updated about the key developments that will impact the sector. Hi, I'm Nikita, your host for this month's Realty Roundup. With expectations of a significant uptick in sales numbers, leading developers have lined up new project launches between November and December in some of India's key residential markets. These markets include Ahmedabad, Kolkata, Mumbai, Hyderabad, and Pune. Supply numbers also show that most of the launches planned over the next few months are in Ahmedabad, Pune, and Hyderabad. अपनी बेहतरीन लिवेबिलिटी, हाई इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स और ग्रोइंग आईटी सेक्टर की वजह से ये तीनों ही शहर होम बायर्स की प्रेफरेंस लिस्ट में आगे रहते हैं। जहां हैदराबाद की बूमिंग टेक इंडस्ट्री, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और अट्रैक्टिव रेंटल यील्ड साउथ इंडिया के इस शहर को पॉपुलर बनाते हैं, वहीं पुणे और अहमदाबाद अपने एक्सपैंडिंग टेक सेक्टर और कंपैरेटिव अफोर्डेबल हाउसिंग ऑप्शंस की बदौलत प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स दोनों को ही अट्रैक्ट करते हैं। Major developers that are planning to launch new projects in the coming months are Godrej, Brigade, Legacy Life Spaces, and Arihant. Major sub-markets where these launches are planned include Rawit, Manjari, and Poonawale in Pune, Gift City and Jagatpur in Ahmedabad, Neopolis and Kokapet in Hyderabad, Shalkia and BL Shah Road in Kolkata, and Kalyan Shilfata Road in Mumbai. New supply trends also indicate that the demand for larger homes sustains. The 3 BHK category continues to lead the new property launches with a share of 37%. The 4 BHK category is also gaining momentum with a share of 22% in the upcoming launches. It is the same share as that of the 2 BHK category. On the other hand, the share of 4 plus BHK category has risen to 7%. चूंकि घर बड़े हैं, इसीलिए इन घरों की कीमत 1 करोड़ से 5 करोड़ के बीच होगी. Meanwhile, in a move that can significantly impact the housing affordability, a group of ministers appointed by the GST Council has recommended raising the price cap for affordable homes. अगर GOM का ये सजेशन सरकार मान लेती है, तो 55 लाख तक के घर अफोर्डेबल होम्स की डेफिनेशन के अंडर आएंगे। अभी तक 45 लाख तक के घरों को अफोर्डेबल होम्स माना जाता है। यहाँ ये जान लेना ज़रूरी है कि अगर घर अफोर्डेबल कैटेगरी में आता है तो एक बायर को उस पर 1% GST पे करना पड़ता है। वहीं अगर घर नॉन अफोर्डेबल कैटेगरी का है तो उस पर 5% GST लगेगा। Since the demand for larger homes with higher ticket price is on the rise, most of the buyers end up paying higher taxes. For example, data from housing.com show the share of the affordable segment in overall sales declined from 31% in the September quarter of 2023 to 16% in the same quarter of 2024. In another development, the Telangana government has recently approved 24,000 crore for Hyderabad Metro Phase 2. This phase aims to add 76.4 km of new metro corridors connecting areas like Hi-Tech City, LB Nagar, रायदुर्ग एंड नागोल एटसेट्रा। बढ़ता हुआ मेट्रो नेटवर्क हैदराबाद में न केवल कई अंडरसर्व्ड लोकेलिटीज को बेहतरीन कनेक्टिविटी देगा, बल्कि गच्चीबौली और बंजारा हिल्स जैसे एस्टैब्लिश्ड एरियाज में भी कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा। साथ ही प्रॉपर्टी के प्राइसेस पर भी अपकमिंग मेट्रो का पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। As the festive season unfolds, the real estate sector is set for a strong finish to the year. Whether you are an investor or an end user, this is an ideal time for exploring new opportunities. Thank you for joining us for this month's Realty Roundup. We look forward to bringing you new updates next month.